यादव और आज हम बात करेंगे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर जो टैरिफ इम्पोज किया गया था, भारत पर जो टैरिफ लगाया गया था उस टैरिफ के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, जब से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद से जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है भारत के खिलाफ ही रहा है। और इस संदर्भ में भारत के खिलाफ उसने कई फैसले लिए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला उसका यह रहा कि वह भारत के सामानों पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया। 50% टैरिफ on Indian goods and services imposed by American President Donald Trump. And it was really very worried about our future, our trade system. अगर आप सबसे पहले टैरिफ क्या जाने, टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है। अगर मान लीजिए 100 रुपये का सामान है, भारत का जो कास्टिंग प्रोडक्ट 100 रुपये में है, और उसको जब अमेरिका में जाता है तो अमेरिका में जब 50% लगेगा तो वो सामान अमेरिका में 150 का बिकेगा। मतलब जो चीज़ें अमेरिकन मार्केट में 100, 125, 120 रुपये में मिल रहा है, वो भारतीय सामान 150 रुपये में मिलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से समस्या क्या होगा कि भारत के सामान बिकेंगे नहीं। जब बिकेंगे नहीं तो भारत के जो किसान हैं या जो प्रोड्यूसर हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सारे बर्बाद हो जाएंगे। जब आपके सामान बिकेंगे नहीं तो वो क्या होंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसी संदर्भ में ये लंबे समय से कहानी चली आ रही थी और फाइनली जो अमेरिका है भारत पर टैक्स इम्पोज करता है 50% का। उसके बाद भारत किससे हाथ मिलाता है, चाइना से और रसिया से। और इस संदर्भ में फिर एक इन दोनों के बीच में एफ-15 फाइल आता है, और एफ-15 फाइल के ही दौरान ये जो ट्रेड डील है होता है भारत और अमेरिका के बीच में, कि भारत के जो सामानों पर 18% का टैरिफ लगेगा और अमेरिकी जो सामान है भारत के बाजार में 0% टैरिफ पर बिकेंगे। मतलब अमेरिकी सामान भारत में आकर सस्ते बिकेंगे, जिससे जो लोकल मार्केट है, लोकल किसान है, लोकल खास करके डेयरी और फार्मिंग वाले जो मार्केट हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे इंडिया के। जैसा कि जब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो यही हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी विदेशी सामान थे उसके टैरिफ लगना बंद हो गया था। जब टैरिफ लगना बंद हुआ तो उसके बाद से सिस्टम क्या हुआ कि भारत में जो विदेशों के सामान आकर भरमार लग गई, विदेशों के सामान भारत में आकर भरमार लगी और इंडियन सामान क्या हो गया, बिकना बंद हो गया, क्योंकि बहुत कॉस्टली हो गया था, जिसकी वजह से भारत के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं, किसान हैं, जो उद्योग है, वो सब बर्बाद हो गया और भारत क्या हो गया, गुलाम लास्ट में आते 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 वो गुलाम बन गया। तो ये कहानी थी भाई पूरी इसके संदर्भ में। तो सेम वही कहानी इस एफ-15 फाइल को चर्चा में आने के समय लगा है भारत और अमेरिका के बीच। जैसे ट्रेड डील हुआ है, ट्रेड डील आपने सुना होगा। जब ट्रेड डील हुआ तो उसके बाद से मोदी जी बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस करवाए समाज में, देश में, कि आई एम द मोदी, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने 50% से टैरिफ 18% ला दिया। और ये बात एक बार भी नहीं बोले कि हमारा जो सामान है वो अमेरिका में जाके तो 18% देगा, लेकिन अमेरिकी सामान भारत में आकर 0% पे बिकेगा, जिससे भारतीय उद्योग क्या हो जाएंगे, नुकसान झेलेंगे। इन सभी चर्चाओं के मे आई नो योर नेम, माय नेम इज अजय कुमार। मैं हूं अजय कुमार भाई। मेरा नाम अजय कुमार है और हम आज चर्चा कर रहे हैं इस पे भारत जो अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट की जज ने 9 जजों का एक बेंच था, उस बेंच में 6 और 3 के मत से फैसला दिया है कि जो टैरिफ लगाया गया है किसके द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारतीय सामानों पर, उस टैरिफ को कम किया जाए। और वो कम कितना करना है, वो 18% से 10% पे आ गया, और ये मात्र 150 दिन, 150 दिनों के लिए। बहुत बढ़िया जानकारी है, आप देखिए, ध्यान दीजिए कि जो 18% मोदी जी ने फिक्स किया था टैरिफ कि हम लोग टैरिफ देंगे 18%, वो टैरिफ
कितना लगेगा अब 10%, वो भी केवल 150 दिनों के लिए। 150 दिनों के बाद वो टैरिफ वो आ जाएगा 3.5% पे, वो 3.5% पे आ जाएगा। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट, जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट थी, 9 जजों का जो बेंच था, उसने ये दिया। और ये क्यों दिया, ये उन्होंने बताया, उन्होंने फटकार लगाई डोनाल्ड ट्रंप को कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग व्हाट यू लाइक, आप हर चीज मनमाने तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां एक नियम है, जिस नियम के तहत ये जो इतना परसेंट का वो टैरिफ लगाए थे, ये टैरिफ तब लगता है जब देश से, किसी बाहरी देश से देश को खतरा हो, मतलब अमेरिका को किसी अन्य देश से खतरा हो, या ऐसी आपातकाल की स्थिति हो, तब इस तरह का टैरिफ लगाया जाता था। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अन्य देशों को डराने के लिए, धमकाने के लिए इतने बड़े बड़े टैरिफ लगा दिए, 100%, 150%, 50%, और ये टैरिफ निश्चित तौर पे बर्बाद कर देने वाला था अन्य देशों को, और ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। लेकिन वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने फैसला दिया कि ये गलत है और ये गलत नहीं हो सकता। ये फैसला दिया भारत के पक्ष में, और भारत के पक्ष में ये कि आपको 150 दिनों के बाद से मात्र 3.5% टैरिफ देना पड़ेगा। मतलब अगर सामान आपका 100 रुपए का है, तो अमेरिका में वो 103.5 रुपए का बिकेगा, न कि 150। तो सिंपल सी बात है, जब वो चीजें जो 150 में बिक रही थी, वो 103.5 रुपए में बिकेगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे, और हमारे सामानों का, इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड जो है वो अमेरिका में बढ़ेगा, और लोग फार्मिंग में लगेंगे, उस चीज के प्रोडक्शन में लगेंगे, जिससे भारत का उद्योग और भारत के किसान सभी लाभान्वित होंगे। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट की जजों को, जिस बेंच ने यह फैसला सुनाया। उसमें से 3, जो 9 जज का बेंच था, उसमें से 3 ने डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के आधार पर डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया कि नहीं, ये जो 50% वो लगना चाहिए। लेकिन 6 जजों ने वो भारत के पक्ष में वोट किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नियम के खिलाफ है, जो अमेरिका के जो नियम है, उस नियम के कंप्लीटली अगेंस्ट है, और इस वजह से इसको खत्म कर दिया गया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये किसी देश की सरकार की वजह से ऐसा हुआ, या वहां की निष्पक्षता, वहाँ की जो स्वच्छता है, वहाँ की जो अच्छाई है, वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, वो देखिए, एक प्रेसिडेंट जो कि सुप्रीम ऑफ द अमेरिका का सुप्रीम होता है, उसको भी दरकिनार कर दिया, और उसको दरकिनार करते हुए यह फैसला भारत के पक्ष में सुनाया कि नहीं, दिस शुड बी नॉट हैपन, दिस शुड बी नॉट हैपन। तो इस तरह से ये फैसला जो है भारत के पक्ष में आता है, और भारत के लिए काफ़ी खुशी का ये टाइम है, क्योंकि निश्चित तौर पे जब 18% टैरिफ देना था, वहाँ पे जब आपको 3.5% टैरिफ लगेंगे, तो भारतीय सामान जो विदेशों में, खास करके अमेरिका में, इसका डिमांड होगा, और भारतीय उद्योग को, भारतीय उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को फ़ायदा होगा, इसके जो मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको फ़ायदा होगा। और इस तरह से ये जो मनमाने तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ सिस्टम चल रहा था, उस सिस्टम को काफ़ी तगड़ा झटका लगा है, और ये लगना ज़रूरी था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आप अपने आप को भगवान समझने लगे थे कि आई एम द सुप्रीम ऑफ द वर्ल्ड एंड आई कैन डू व्हाट आई लाइक, बट दिस इज नॉट द रियलिटी माय डियर फ्रेंड्स। यू कैन इम्पोज द टैरिफ, but there is a limitation. You have to follow some rules and regulations that is mentioned in the Constitution of America, and the judges of the Supreme Court of America give this decision that you cannot impose 50%, 18% of tariff to any country, especially India. There is a limitation to impose tariff on any country, and you have to just impose 10%
right now for only just 150 days, and after 150 days you have to impose only and only 3.5% of the tariff to American goods and services which would be sold in America. And this is a good news for our India. India would definitely would be benefited with this decision of the Supreme Court and being celebrated in the whole of the nations, because the productions in India would be definitely drastically goes high, and this would be very credible to the judges of the Supreme Court, and the credibility directly goes to the Supreme Court judges who gave the decision, who gave this decision about the in the favor of India, that only 3.5% of the tariff of Indian goods and services would be imposed on the Indian goods and services. So my dear friends, if you have not subscribed my YouTube channel, first of all, I would like to request you, please subscribe my YouTube channel and like this video if you think that this is the very important news and it's really remarkable, because the tariff was what was imposed by the American President Donald Trump on India is now drastically decreased up to directly to 3.5%, and it would be definitely benefited to the whole of our nations. And India is now being happy to be come out this decision in the favor of India by the Supreme Court of the America and American judges. It shows that how the constituents should be the supreme than any government in the power. The government, the persons holding the power in the government will definitely lose one day the majority, and the power would be lost. But the power of the Supreme Court is always constant. Who will sit on that position will hold the most extremely power, and that we have to follow the instructions what our constitution given to us. And this is the purity of our constitutions, and because of this everyone is now claiming that India would definitely have to follow this should be happen in India. While I'm talking about some judges, as you know that recently a contest of Vidhan Sabha elections was held in Bihar, when you know that what is the guidelines of the election commissions. There you have to follow the code of conduct of the elections. That if the date of elections is being announced by the election commission, then after you cannot distribute the freebies, you cannot distribute the monies, you cannot initiate any new schemes to the state persons. But during the elections, during the publication, during the election in the Bihar, what was happened, the previous was distributed to the all women's, and that was deflected. It was deflected the voters. It was directly hampered the voters in the favor of BJP, and that's why this came into the power. But right now, what is happening? The same was happening the same was happening. If I'm talking about which state in the south where Stalin is in the government against the BJP ruling in the government, Stalin, who is now just started to give some through the scheme started to distribute some sums of rupees, and the court decided that you cannot distribute rupees. This is not good for the culture of our constitution, and etc etc, and the case was lost against the government of Stalin in Tamil Nadu. But the same was completely APIL was applied by Prasant Kishore, related from the Bihar, and his petition was not accepted. It was rejected, and this is the dual character of our Supreme Court, our High Court, or any court. This would be not, I think, good for a fair constitution. So, what do you think about this, my dear friends? And I hope this would be good. But the American Supreme Court now shows the purity of the constitutions, that whatever is mentioned in the Constitution of America would have to follow at any cost. And that's why American president is now seems to be hopeless right now before the decision of the Supreme Court against the Donald Trump. Donald Trump was just assuming that he has the supreme power. He assumes himself like a god, that he can do whatever he likes. He can impose
what kind of the tariff he wants to impose on any country. And because of his decision, a number of the country in the world was drastically in the frightened condition. But now the Supreme Court decision in the America has completely challenged the all decision of the Supreme Court, all decision of the Donald Trump, and finally came into the favor of India, and India is now being imposed only 3.5% tariff of of his service and goods in the America. So I hope everyone is being expecting that this would be always continue in the favor of India. As you know, earlier in the government of the Congress, the same tariff was imposed and the same tariff was given, but as soon as the closeness of American President Donald Trump and our Prime Minister Narendra Modi goes closer, and their friendship was seems to be much more tightened, and the tariff was also tightened by Donald Trump. That was never in the favor of India. If you say that Donald Trump, my friend, you are claiming at every stage, and that time if the tariff by the President Donald Trump imposing on India a much higher level as earlier, it would drastically a very sad news for us, and your transit is not worth to appreciate in India, and that's why everybody is now drastically declining to the interest in the friendship of American President Donald Trump and Indian Prime Minister Narendra Modi. Both are goes together, but there are something a number of people are expecting that what is the reason that our president, our prime minister Narendra Modi is never going to oppose any decisions, never stands against any decision of American President Donald Trump, especially when a notice comes out, when the epstein files comes out, and when a threat was given by the Donald Trump American president to our prime minister Narendra Modi, and it was not threat to our prime minister Narendra Modi, it was threat to our country, and it was threat to our country, our self-respect, that I can end the Modi's futures. It's in my hand. Why he said anything, and when after that's all, why Narendra Modi not going to oppose and in a little bit could speak against Donald Trump, and a number of people are going to make a comparison between the prime minister, earlier prime minister, ex-prime minister, later Indira Gandhi, and right now ruling in the power of Prime Minister Narendra Modi. That how they are similar, and I think there is no any similarity. Indira Gandhi was really a great leader. She was a great prime minister of our country, but in the context of our Prime Minister Narendra Modi, this is going to completely worse. So what do you think all about, my dear friends? I think this is right. And what do you think? Please give your opinion in the comments box. I'm just waiting for you. Give your opinions. And we would discuss in the next video of any new topics. For till that, I hope you would like it. And finally, this is my request. If you have already not subscribed my YouTube channel, please subscribe and like this video and share with your friends so that the number of people may be come to know about this exact information, what happened in America and what would be the benefits of India as the decision of the Supreme Court of America comes out against Donald Trump's tariff impositions on India to 18% to just give 10%, and after 150 days it would be drastically goes up to down up to 3.5%, and it would be really make us so happy. And I would like to appreciate once again the Supreme Court of America, that how this decision was taken without any fears, and it's really amazing. Jai Hind, Jai Bharat.